Assalamualaikum dear students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 1413 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड फाइनल गेस्ट पेपर। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, जिसकी वजह से इनके आने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आप लोग इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे तो एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्क्स इजीली हासिल कर सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्टन कॉरपोरेशन बिगन operations on January 1, 2010. The following transactions and relating to stockholders equality occurred in the first 2 years of the कंपनी ऑपरेशंस। ठीक है, एंड इसमें पॉइंट आ जाएंगे जनवरी 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड जून 4 रिक्वायर्ड आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग 2008 एज द बेस ईयर प्रिपेयर आर ट्रेंड एनालाइज ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड टेल वेदर द सिचुएशन शोन बाय द ट्रेंड्स in favorable or unfavorable round your answer to one decimal place। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ए वाला यूज है, डिस्क्राइब द 3 मेजर एक्टिविटीज दैट आर रिपोर्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड इसका बी वाला यूज है, फॉर द ईयर एंडेड जून 30, 2011 net income for Silk Corporation was 7,400. Depreciation expense was 2,000 during the year. Accounts receivable increased by 4,400. Inventories increased by 7,000. Prepared rent decreased by 1,400. Account payable increased by 14,000. Salaries payable increased by 1,000 and income tax payable decreased by 600. Use the indirect method of prepare a schedule of cash flow from operating activities। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन अक्टूबर 1, 2010 टेंडर कॉरपोरेशन इशूड 5 लाख ऑफ 9% bonds at 96. The bonds are dated October 1 and pay interest semi-annually. The market rate of interest is 10% and the company year end of December 31 prepared the entries in journal form of to record the issuance of the bonds, the accrual of the interest on December 30, 2010 and the payment of the first semi-annual interest on 1st April 2011 is when the company uses the effective interest method to amortize the bond discount। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, यूज द इफेक्टिव इंटरेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द अमोर्टाइजेशन। इसमें 3 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि विद रिगार्ड टू द बॉन्ड इशूज ऑन अप्रैल 1, 2011। ठीक है, एंड इसमें पॉइंट आ जाएंगे, हाउ मच कैश इज रिसीव्ड। सेकेंड है, विद रिगार्ड टू द बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन सितंबर 30, 2011। ठीक है, इसमें आएगा हाउ मच कैश इज पेड इन इंटरेस्ट। थर्ड में आ जाएगा विद रिगार्ड टू द बॉन्ड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन मार्च 31, 2012। इसमें आएगा हाउ मच कैश इज पेड इन इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वैल्यू ओन्स एंड ऑपरेट्स mini mart, which of values action described below are business transactions। Explain why any other actions are not
कंसिडर्ड ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि वैल्यू रिड्यूस एंड वैल्यू प्लेज हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड वैल्यू फिल्स हिज सन्स कार विद गैसोलाइन एंड 4 वाला है विलो प्लेज इंटरेस्ट टू हिमसेल्फ। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन कैश इक्विवेलेंट्स एंड एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग कैश इंक्लूडिंग बैंक रिकॉन्सिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ऑप्टिमा कंपनी प्रोड्यूस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेट टीच कंपनी सेल्स ऑप्टिमा रिसीव्स loyalty of 50% of sales teach company pays loyalties to Optima company and semi-annually on May 1 for sales made in July through December of the previous year and on November। ठीक है, इसमें है 1 for sales made in January through June of the current year। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एक्सपेंस फॉर टीच कंपनी एंड रॉयल्टी इनकम फॉर ऑप्टिमा ड्यूरिंग 2009 रिकॉर्ड द एडजस्टिंग एंट्री डेट ईच कंपनी मेड ऑन दिसंबर 31 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर बात कर लेते हैं। इसमें 2 पॉइंट हैं, जैसे कि फर्स्ट है व्हाट advantage do computer system offer our manual system and इसका बी वाला है explain the goals and uses of special journals। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है for each of the following separate case prepare adjusting entries required of financial statements for the year ended on December 31 2018 assume that prepared expenses are entirely recorded in asset account and that fees collected in advance of work are innately recorded as liabilities। ठीक है, इसमें आ जाएंगे 1/3 ऑफ द वर्क रिलेटेड टू 13,000 कैश रिसीव्ड इन एडवांस इन परफॉर्म्ड दिस पीरियड। ठीक है, एंड लास्ट ये हो रहा है द कंपनी हैज़ एंडेड बट नॉट रिकॉर्ड 750 ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सीडीएस फॉर द ईयर एंडेड December 30 2018।